Good afternoon. Welcome to this solo learning journey portion of line. The line will start from z0. How? Like 2 pi by 3 nothing because this point is 2 pi by 3 hinge, so that the two vectors should be when argument of z minus z1 and z minus z2 is equal to 0. Particular with a diametric it will be final vector and z minus I will be initial vector. Okay, जो नहीं तो मेजर वाला सर्कुलर आर्क मिल सकता है और या तो माइनर वाला सर्कुलर आर्क मिल सकता है. Okay, argument based locus, the three form. Yeah, that's it for today. I hope आपने enjoy किया होगा. Hello, good afternoon. Welcome to this solo learning journey. Today we will complete this locus of a complex number based on argument. Okay, that will be about 4 form, I guess, like the modulus we have done. So let's start. First form में दो पार्ट है. Part 1, that is argument of z, where z is a complex number. Okay, it's a moving complex number z, and yeah, argument of z is equal to theta, and also argument of z minus z naught is equal to theta. In both the cases, you will find a portion of line. Let's say case number 1, C1, argument of z is equal to theta. Okay, argument of z is equal to theta, and case number 2, argument of z minus z naught is equal to theta. In both the cases, you will find portion of line. Okay, how? Let's say example. First case 1 के लिए example, like argument of z is equal to pi by 4. It means z is a point which is about plus pi by 4 angular distance, lies in plus pi by 4 angular distance from the real positive x-axis. Okay, yeah, so let's draw it. This is complex plane, and argument of z is equal to pi by 4. That means z will lie in somewhere in these lines, isn't it? This is pi by 4 plus pi by 4. If it said that minus pi by 4, then it will be like this. This is minus pi by 4. This is argument of z is equal to minus pi by 4, and this is plus pi by 4. Here you should remember that this 0, 0 will be excluded. Why? Because for 0, 0, 0 plus I dot 0, in this case theta is undefined, right? Tan inverse 0 by 0, that is undefined. It's undefined, that's why 0, 0, this point will be excluded. Okay, now for case number 2, one thing you have to remember, case number 2, that is argument of z minus z naught is equal to theta. Here it will also provide line which starts from z naught. Okay, in this case the line will start from z naught. How? Like for argument of z minus 2 is equal to, let's say, pi by 3. So z naught is nothing but 2 here. 2 के जगह कुछ और भी हो सकता है, 2 plus 3i, root 5 plus 7i, something like that. Okay, so let's try to draw this. This is complex plane, x and y मान लेते हैं.
Start from 2. Z naught is equal to 2. It's a this is 0, 0, 1, 0, 2, 0. Z naught actually है क्या यहाँ पे? It's 2, 0 actually. Okay, 2, 0. So 2, 0 से start होगा. यही से x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है आपको. अगर मान लेते कि 0, 2 होता, 2, 0 की जगह 0, 2 होता, तो देन यही पे होता. उसके बाद दिखाते हैं उसका अभी आगे. ओके, सो अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, राइट? पाई बाई 3 इज समवेयर हियर. दिस इज प्लस पाई बाई 3. Starting from 2, 0 and then this line. Okay, this is the argument of z minus 2 is equal to pi by 3. अगर यहीं पे बोला जाए कि argument of z plus 3 minus 2i is equal to 2 pi by 3, then how would you will draw this? Okay, now at first find z naught. Here z naught, z minus 3 plus 2i is equal to 2 pi by 3, right? Sorry, minus 3 plus 2i, minus 3 plus 2i. Now draw this. At first find this z naught. So here z naught is equal to minus 3 plus 2i. Draw it in complex plane. So minus 3 plus 2i. Minus 3 इसके लिए अलग से बनाते हैं. Yeah. This is complex plane. Now at first z naught is minus 3 plus 2, right? This is 0, 0, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, 2i, 1, 2. So this point is minus 3, 2. It is minus 3 plus 2i. Okay, yes. Now at first you have to draw parallel line with x-axis. This is the parallel line with x-axis, so that you could draw the theta there. You could find theta here. Now theta is 2 pi by 3. 2 pi by 3 is in the principal range, so 2 pi by 3 is 120 degree. So you have to start from here. 2 pi by 3. This is 90 degree. 2 pi by 3 somewhere here. Okay. Yes. This is plus 2 pi by 3, and this is the line. This is the argument of z minus. This is the argument of z minus 3 z plus 3 minus 2i is equal to 2 pi by 3. I hope it's clear. अगर यहीं पे minus 2 pi by 3 होता, then हम यहीं से इसको minus 2 pi by 3 जितना होता, ये लिखते हैं. Okay, this will be argument of just minus 2 pi by 3. Okay, I hope it's clear. अब इसी से related एक question करेंगे. Okay, question number 46. Area enclosed by P1 such that argument of Z is equal to pi by 3. Then P2 such that argument of z is equal to 2 pi by 3, and P3 such that argument of z minus 2 minus 2 3i is equal to pi is a root b, then find a plus b. Okay, so you have to first draw these three locus and then find their enclosed area. Okay, now compare with a root b, then a plus b. Okay, so first one, P1 is equal to argument of z pi by 3. एक पिक्चर में ड्रॉ करेंगे. ओके, फर्स्ट
आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3. π/3 वाला लाइन कहाँ है? दिस इज π/3. So this one is argument of z is equal to π/3. Now second one, argument of z is equal to 2π/3. 2π/3 nothing but this point is 2π/3, 120 degree. This is 2π/3. Now third one, this is actually p1, this is p2, now p3. Okay, in these two cases the line starts from 0, 0. Argument of z means argument of z minus 0. That's why simply we write argument of z. It starts from 0, 0, but in 0, 0 it's hollow circle. Okay. Now p3 argument of z minus 2 minus root 3. p3 को हम लोग जस्ट लिख रहे हैं, argument of z minus of 2 plus root 3 I is equal to pi. At first point is 2 plus root 3 I. This is z0. z0 is 2 comma root 3. Okay, so plot it. This is 1, this is 2 comma root 3. थोड़ा सा बड़े लेते हैं ताकि आसान हो. मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, root 3 is somewhere here. Okay, 2 comma root 3. This point is 2 comma root 3. So this third line will be starting from this z0, that is 2 comma root 3, 2 plus root 3i. Now the angle is given here is pi. Pi means at first you have to draw a horizontal line parallel to x-axis, parallel to real positive x-axis. So draw it, and down. Then you have to draw the angle which is given. Actually argument, that is pi here. Start from here, pi is here. Right? This is pi. Now simply this line. So this line is here argument of z minus 2 minus root 3. This is p3. So the enclosed area of p1, p2 and p3 are simply this triangle. Okay, I hope you got it. Now find the area of this triangle. This is what? This is 2 comma root 3. This is root 3. ये भी root 3 होगा. Yeah, minus 2 comma root 3. Symmetry से देखे तो. Okay, now area of this triangle. Okay, area of this triangle क्या होगा? 1/2. हाइट कितना है इसका? root 3. Base, this is 2, this is 2, 4. 2 is 2 root 3, and this is given as a root b. A root b. So compare करेंगे, a will be 2 and b is 3. So a plus b is nothing but 2 plus 3 is equal to 5. Okay, so yeah, you have to use this arguments based locus to find first a graph and then later on just calculate it. Okay, yeah, that was a form 1. Now we'll move into form 2 and 3. Okay, now इसके बाद वाला फॉर्म से पहले हम लोग जस्ट थोड़ा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एक बार देख लेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल
कैसे हम लोग जस्ट डिनोट करते हैं? ऑलरेडी वी हैव डन दिस आई गेस इन डिफरेंट वे, बट लेट्स से ओके, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है z1, this is z2 and this is z3. You might remember in the concept of rotation, okay, so this is z3 minus z1 vector and this is z2 minus z1 vector. Now the angle between them is this angle, मान लेते हैं +60 डिग्री, ओके, +60 डिग्री. माइनस होता तो ये इसका डायरेक्शन उल्टा होता. नाउ आई हैव मेंशन्ड यस्टरडे that you have to find a hinge, you have to create a hinge, and from that hinge two vectors should be spreaded away, okay, like एक hinge है जहाँ से दो वेक्टर निकलना चाहिए, okay, टकराना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए, तब जाकर हम लोगों को वो रोटेशन का फॉर्मूला भी यूज करेंगे और एंगल भी वैसे लिखेंगे, ओके. सो इसको याद रखना है. थीटा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं एक्चुअली? आर्गुमेंट ऑफ मान लेते ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके, हॉरिजॉन्टल रियल एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये y axis. So argument of this total angle, इस एंगल का हम लोग मान रहे हैं पाई, ओके, इस एंगल का हम लोग फाई मान रहे हैं, इसको थीटा मान लेते हैं अभी के लिए, हाँ मान लो थीटा और पाई, इसको थीटा मान लेते हैं, ओके. नाउ आर्गुमेंट ऑफ z2 minus z1, argument of z2 minus z1, that is phi plus theta, right? And now argument of z3 minus z1, इस वेक्टर का एंगल कितना है? That is simplify, actually this is phi, हाँ, this short angle is phi and theta is from here to there. I hope it's clear. So this is phi. Now find this angle, like argument of, minus कर देंगे simply z2 minus z1 minus argument of z3 minus z1. बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है. So what you will get? Phi plus theta minus phi theta, okay. So theta is what? Argument of z2 minus z1, second that is final vector. ये क्या है? ये final vector और ये initial. इसका हम लोग ऐसे बोलेंगे final minus initial. So argument of z2 minus z1 minus of argument of z3 minus z2, that is argument of final minus argument of initial will be equal to the angle between them, okay. Yes. Now इसको हम लोग का आर्गुमेंट का जो सिंपल फीचर है, जो सिंपल है वो इज लाइक लॉग, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? आर्गुमेंट ऑफ z2 minus z1 by z3 minus z1, okay, and this is equal to theta. I hope it's clear कि angle between two vector, how it's written in complex plane. It's written like this: argument of final vector and a minus of argument of initial vector is equal to argument of whole z final by initial is equal to theta. That is angle between them. Okay? Yes. Okay. So yeah. और एक चीज जो याद रखना है, क्रिएट या hinge so that the two vectors should be spreaded away from that on single point, okay, like this. अगर एक वेक्टर ऐसे है and
दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ओके, एंड बोला गया कि दिस एंगल इज थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस इज मान लेते हैं एफ आई एंड एफ, कोई सा भी एक मान लेता हूँ, ओके। तो इसका एट फर्स्ट यू शुड क्रिएट लाइक दिस, हिंज बनाना है। तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सा शिफ्ट करके लेके आओ इस पॉइंट में, राइट, यस, देन इसको इस पॉइंट से दिखाओ, राइट। सो दिस इज आई, दिस इज आई, देन इसको अगर इसे शिफ्ट करना है उसके बाद नीचे आना है, तो उसके बाद इसका जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, एंड दिस इज थीटा, राइट। सो it will be pi minus theta, okay. So argument of f by I is equal to pi minus theta. Now पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन होगा, you have to you know, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तुम कैसे देख रहे हो, पहले फाइनल देन इनिशियल। सो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी पॉजिटिव, ओके, प्लस पाई माइनस थीटा। अगर ये उल्टा होता देन माइनस होता, ओके। दैट्स ऑल यू शुड रिमेंबर व्हाइल फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। तो इसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे लोकस का, based on argument, okay. So फॉर्म टू में टोटल 4 इक्वेशन है, सो चारों फॉर्म को हमें याद रखना है फॉर्म 2 के बेस में। सो यहाँ पे केस 1, टोटल 4 केस है। केस 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 is equal to 0. First case, when argument of z minus z1 and z minus z2 is equal to 0, but z1 and z2 are two fixed point, okay, you should remember it. Z1 and z2 are two fixed point, and z is a moving point, okay. So in this case, what you will find, this is z1, this is z2. You will find extended line, okay. This line, not this one, this extended line. Only thing that you should remember, this z1 and this z2 here, this will be hollow circle, okay. This will be hollow circle. Now ऐसे एक चीज हमने, एक ग्राफ हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो था मॉड्यूलस में, राइट। मॉड ऑफ z माइनस z1 minus of mod of z minus z2, like this. शायद याद होगा, z minus z1 minus of z minus z2 is equal to k. जब k की वैल्यू z1 and जब k की वैल्यू mod of z1 minus z2 का z2 के साथ बराबर था, in that case we find this type of graph. Well, in that case, graph was like this, not hollow circle here. There, that is enclosed z1 and z2, okay. But here in this case, it's hollow circle. It means that z1 and z2 except baki pura extended line, okay. I hope it's clear. The second case also like this. You have done it before, something like this, z minus z1 by z minus z2 is equal to pi. In this case, you will find the locus is the line segment itself, z1 to z2, okay, like this. If this is z1 and this is z2, then the line segment here, okay,
Here it's also the z1 and z2 is neglected. Okay, these 2 point will be exception. मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी जो लाइन है वो इसका ग्राफ होगा. I hope it's clear. Yeah, you just need to remember this too. And after that, our third portion. Third, case 3, C3. C3 and C4. Case 4 and C3. यही पे क्या होता है? Argument of same thing. लेफ्ट साइड में सेम ही है, राइट साइड में जस्ट प्लस माइनस पाई बाई 2. ओके, 0 पाई एंड प्लस माइनस पाई बाई 2. Here you will get semi-circular arc. Okay, semi-circular arc with a diametric end Z1 and Z2, where Z1 and Z2 are two diametric ends. Okay, I hope it's clear. Now हम लोग देखेंगे एक्चुअली विजुअलाइजेशन कैसा होता है इसका. ओके, सेमी सर्कुलर आर्क, something like this you will find. Okay, or this you will find. So let's see how it's done. एक सर्कल मान लेते हैं. सर्कल लग रहा है. जो भी है इसी को सर्कल मान लेते हैं. ओके, नाउ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2. मतलब प्लस पाई बाई 2 भी हो सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 भी हो सकते हैं. ओके, विद द डायमेट्रिक एंड ऑफ z1 एंड z2. So z1 एंड z2 will lie somewhere like this. मान लेते हैं ये z1 है एंड दिस इज z2. ओके, दिस इज z1 एंड दिस इज z2. नाउ कौन सा सेमी सर्कल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? यू हैव टू फाइंड इट बाय दिस प्लस माइनस पाई बाई 2. फ्रॉम दिस थीटा यू विल गेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू. कैसे? जैसे मान लेते हैं फर्स्ट z यही पे कहीं पे है. दिस इज z. वी नो दैट दिस एंगल इज पाई बाई 2. राइट? यस. अगर हम लोग नीचे वैसे ड्रॉ करेंगे then we'll also find this is pi by 2, isn't it? अब पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, इसके ऊपर बेस करके हमें ऊपर वाला सेमी सर्कल चुनना है या फिर नीचे वाला सेमी सर्कल चुनना है, ये खुद से फाइंड करना है. ओके, ये वाला चीज खुद से करना है. नाउ हियर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन. ओके, यस. जब तीन पॉइंट दिखे, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का पहला थ्योरी क्या था, पहला जो पॉइंट टू बी नोटेड क्या था कि 3 पॉइंट होने चाहिए, उनमें से आउट ऑफ देम 2 शुड बी नोन एंड थर्ड वन इज अननोन. In that case you will use the concept of rotation. Here in this case Z1 and Z2 are 2 known point. Okay, now Z is unknown point, so here we will use, not actually use but yeah, उसके डायरेक्शन वाला चीज हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज करेंगे. जैसे सबसे पहले 2 वेक्टर बनाना होता है, राइट? यस. तो वेक्टर बनाने के लिए इसको एक पॉइंट नाम दे देते हैं Z पॉइंट, क्योंकि वो Z ही है. ये वाला पॉइंट इसका नाम Z दे देते हैं. ओके, नाउ यस, एक्चुअली इसका Z3 देते हैं और ये Z4 देते हैं. नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट, एक्चुअली इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? दिस इज Z3 माइनस Z1. You have to form 2 vectors, like वो vectors उसका डायरेक्शन कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है.
उसका सेकंड पॉइंट हाउ पे लिखा था। ओके, सो इसको यू हैव टू चूज बाय योर वन। हम ऐसे चूज कर रहे हैं कि इस साइड से इस साइड जा रहे हैं एज अ वेक्टर। ओके, दिस इज z3 minus z1 vector and this vector is z3 minus z2 vector। now एक चीज जो एंगल, जब हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कि एक पॉइंट से दो वेक्टर्स निकलना चाहिए, पर यही पे इस पॉइंट पे टकरा रहा है, तो इसको हम लोग जस्ट एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट से। ओके, ये एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। एंड दिस इज व्हाट इज दिस z3 minus z2 and this is z3 minus z1। इनका बीच का एंगल कितना होगा? ये भी पाई बाई 2 ही है, राइट? जस्ट ऑपोजिट एंगल, वो भी पाई बाई 2 ही है ना। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? z minus z1, राइट? z minus z1 ये ऊपर वाला वेक्टर है। ये जब हम लोग z को z3 नाम दिए हैं। ओके, यस, ओके, समझने के आसानी के लिए इसको z ही मान दो। ओके, सो z माइनस z1 तो ऊपर में फाइनल होता है और नीचे वाला जो है वो इनिशियल है, तो ये वाला फाइनल वेक्टर है और ये वाला इनिशियल वेक्टर है। एंड इन कंसेप्ट ऑफ रोटेशन व्हाई वी यूज्ड नॉट ओनली कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, हियर आल्सो इट्स you should always put final vector in the above and initial vector in the below. Okay, so argument of final by initial and initial को हम लोग रोटेट करके final हमें मिलता है। okay, so initial को ही रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करके हमें ये वाला वेक्टर मिला। कितना रोटेट किया? पाई बाई 2 रोटेट किया, राइट? और ये कौन सा एंगल पे रोटेशन हुआ? रोटेशन is on the clockwise direction and clockwise direction it's negative, right? हाँ, अब इस पॉइंट को देखा हमने। ओके, इस पॉइंट को देखें। सो अगर यहीं पे आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 by z minus z2 is equal to plus pi by 2 होता तो हमें नीचे वाला लेना पड़ता, सॉरी माइनस पाई बाई 2 होता तो हमें अपर वाला आर्क लेना पड़ता। ओके, सो इन दैट केस that was the semicircular arc up to this। okay, ये जो semicircular arc लिखा है with diametric end z1 and z2, then it will be the curve here। okay, this half will be neglected, but if it was, हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं। ये वाला हम लोग का माइनस पाई बाई 2 है, राइट? इस केस में देखो तो सबसे पहले ये वाला वेक्टर क्या होगा? दिस वेक्टर इज z minus z1 and this one is z minus z2। here इस टाइप होगा। now you have to extend it। extend किस लिए कर रहे हैं हम? ताकि एक पॉइंट से निकलता हुआ दो वेक्टर होने चाहिए। ओके, now extend करने के बाद तो ये z minus z2 रहा and this is z minus z1 था। ना ये पे इनिशियल कौन सा है? z माइनस z2 जो है वो इनिशियल है, तो ये I है एंड ये F है, राइट? कितना एंगल रोटेट किया? पाई बाई 2 एंगल रोटेट किया। किसके तरफ? I को हम लोग रोटेट करवाते हैं हमेशा, इनिशियल्स को रोटेट करके हम लोगों को फाइनल मिलता है। ओके, इनिशियल को रोटेट करके फाइनल मिलता है। और ये कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हुआ? This is in the direction of anti-clockwise direction, that's why it will be plus। okay, if so argument of z minus z1 by argument of z minus z2 is equal to plus pi by 2, then this will be the semicircular arc। I hope it's clear। okay, so ऊपर याद रखना है ये चीज कि ऊपर वाला जो है that is final, नीचे वाला इनिशियल। इनिशियल को रोटेट करके हमें फाइनल तक जाना होता है। ओके, उसको जगह पे शायद ये ना भी दे सकते हैं। तो जब ये दिया रहेगा तो आपको फाइंड करना है कौन सा आर्क बोला, सेमी सर्कुलर आर्क। ये इसलिए जानना जरूरी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, देयर वाज 3 स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन की जगह एक सेमी सर्कुलर आर्क वाला ये ऐसा फॉर्म में भी दे सकते हैं. सो दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर दिस. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी विल solve a question. Now try to draw this semicircular arc. Okay, argument of z minus 2i by argument of z minus 3. No, sorry. Argument of whole z minus 2i by z minus 3 is equal to minus pi by 2. सबसे पहले z1 and z2 फाइंड करो. Try it by your own. सबसे पहले z1 and z2 फाइंड करें. So यही पे z1 क्या है? This is z1 and this is z2. तो z1 क्या है? 2i. इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0,2. राइट? यस. एंड z2 क्या है? z2 is 3. इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3,0. So this is z2 and this is z1 and this is minus pi by 2. It is given. Okay. So एक सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. 0,2 and 3,0. Okay. 3,0 somewhere here. 0,2. I hope this will be the circle. Okay. Now which arc is this? इसका सेंटर, सॉरी, सेंटर कहीं पे ऐसे लाई करेगा. अरे हाथ से ड्रॉ करते वक्त यही प्रॉब्लम है. यस. ओके. नाउ ये सेंटर है. मान लेते हैं कि यही सेंटर है. ओके. नाउ फर्स्ट सर्किल ड्रॉ करो एक. उसके बाद कौन सा सेमी सर्कुलर आर्क होगा ये आपको रोटेशन वाला कंसेप्ट से याद करना है. तो दो डायमेट्रिक एंड दिया हुआ है z1 एंड z2. z1 and z2. This is z2 is 3,0, isn't it? And z1 is 0,2. ये सेंटर है. नो, या तो ये वाला आर्क हो सकता है या तो ये वाला आर्क हो सकता है. इन दोनों में से कोई एक आर्क होगा. माइनस पाई बाई 2 से हम लोग ये जो थीटा दिया है इसी से हम लोग पता लगाएंगे कि ऊपर वाला आर्क है या नीचे वाला आर्क है. ओके. सो एट फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट मान लो कहीं पे एक पॉइंट है like there and this is the point. In this case, in this arc, find, let's say this is z. So at first what you need to do, you need to find this z minus z1 vector, then this, and this is what? Z minus z2 vector. Okay. Now create a hinge from which these two vectors will be spreaded away. So इसको extend करो. इन दोनों को extend करते हैं. एंड ये वाला जो एंगल है दिस इज पाई बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कुलर एंगल राइट एंगल होता है तो पाई बाई 2 होगा. नाउ दिस वेक्टर इज, इसको एक्सटेंडेड वाला वर्जन ये है z2 एंड z minus z1. ओके. यस. सो कौन सा वाला वेक्टर जिसको हमें इनिशियल मानना है और कौन सा वाला वेक्टर जिसको हमें फाइनल मानना है वो क्वेश्चंस में, मतलब प्रॉब्लम्स में जो दिया है उसी में से
आपको नोट करना है। सो z माइनस 2i उस चीज को हमें फाइनल मानना है। z माइनस 2i दिस विल बी z माइनस 2i z1 okay z minus 2i this is equal to initial, and here in this vector this is actually what, this is z minus 3, sorry z minus 2i it will be final vector and z minus I it will be initial vector. okay, जो नीचे आएगा उसको हम लोग initial मानेंगे, जो ऊपर रहेगा उसको हम लोग फाइनल करेंगे। ओके, इनिशियल को रोटेट करके फाइनल मिला। ओके, नाउ फाइनल को इनिशियल को रोटेट करो, फाइनल की तरफ रोटेट किया तो ये भी π/2 ही है। नाउ इट्स along the clock, right, clockwise, that's why it will be minus π/2. okay, so it's minus π/2 and क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ z minus 2i by z minus 3 is equal to minus π/2. सो हमें नीचे वाला देखने का जरूरत नहीं, नीचे वाला पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला ही minus π/2 ऑलरेडी आ चुका है। ओके, नाउ अगर यहीं पे इनिशियल होता देन ये वाला प्लस आ जाता। ओके, अगर उल्टा हो जाता देन प्लस आ जाता। इन दैट केस यू शुड वेरीफाई दिस ऑल्सो कि वो वाला नहीं हुआ तो नीचे वाला हो सकता है। ओके, सो कोई एक वेरीफाई कर रहा है। सो दिस विल बी the locus in this case. okay, this will be the locus. ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है यही लोकस है with z1 and z2, that is z1 0,2 and z2 3,0 are two diametric ends. Now locus based on argument का last form, okay, last form इसकी सही करेंगे, नोट करते रहा करो मेरे साथ। लोकस बेस्ड ऑन आर्गुमेंट का लास्ट फॉर्म है। ओके, फॉर्म नंबर 3, सेम वही चीज है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2। okay, argument of z minus z1 by z minus z2 is equal to theta, same चीज theta, but which is not equal to theta। कौन कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता, एक तो 0 नहीं हो सकता, पाई नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, माइनस π/2 नहीं हो सकता। अगर 0 होता है तो कौन सा वाला केस आप लोगों को करना है, 0 है मतलब दिस केस। ओके, अगर पाई है मतलब उसके नीचे वाला, अगर π/2 प्लस π/2 है और माइनस π/2 है तो इससे पहले जो हमने किया वो वाला होगा, राइट, दिस वन प्लस π/2 और माइनस π/2 के केस में। सो इन दिस 4 सिचुएशन यू विल फाइंड डिफरेंट लोकस। अपार्ट फ्रॉम दिस, okay, apart from these 4 cases, what you will find? You will find a locus that is portion of सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क ही मिलेगा यहीं पर भी, जैसे प्लस माइनस π/2 में सेमी सर्कुलर था, वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट था एक सर्कल का आधा, या तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा। ओके, जो दो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है उसका ऊपर वाला हिस्सा या फिर उसका नीचे वाला हिस्सा मिला था। इन दिस केस यू विल फाइंड लाइक एक सर्कुलर आर्क, लाइक मान लेते हैं ये अगर सर्कल है, ये z1 है एंड ये z2 है, ये 2 पॉइंट्स हैं। okay, now these two are not diametric ends। okay, these two are not diametric ends। in this case या तो आपको ये वाला सर्कुलर आर्क मिल सकता है
या तो ये वाला सर्कुलर आर्क मिल सकता है, एक तो मेजर वाला सर्कुलर आर्क मिल सकता है और या तो माइनर वाला सर्कुलर आर्क मिल सकता है। ओके, कौन से केस में मेजर मिलेगा, कौन से केस में माइनर मिलेगा, उसको हमें देखना है, वो हमें एंगल से पता चलेगा। ओके, एंड हाउ इज दैट? नाउ यहीं पे दो केसेस हैं, केस 1, केस 2। ओके, मेजर सर्कुलर आर्क कब मिलेगा? मेजर सर्कुलर आर्क तब मिलेगा when theta is acute angle. Theta is acute. And case 2, minor arc मिलेगा when theta is obtuse. 90 डिग्री से कम है तो 90 डिग्री से कम है तो मेजर वाला एक्सिस मिलेगा, 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल तो हमें माइनर वाला एक्सिस मिलेगा। और ऐसा क्यों, कैसे ये 90 डिग्री से कम है तो मेजर और माइनर? तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल। ओके, नाउ दिस इज Z1 and this is Z2. Okay, this is Z1 and this is Z2. Yes, so एक तो ये वाला सर्कुलर आर्क आपको मिल सकता है अप टू हेयर और यही से स्टार्ट करके ये वाला सर्कुलर आर्क आपको मिल सकता है, राइट? नीचे वाला माइनर सर्कुलर आर्क है और ऊपर वाला मेजर सर्कुलर आर्क है। Now these two points will be the end points of that circular arc. इस चीज को याद रखना है। Okay? Now Z1 and Z2 are there. So find angle. इस दो पॉइंट को यूज करके कोई भी एंगल अगर मेजर सर्कुलर आर्क में दे, it will be always less than 90 डिग्री। Why? Because जब ये दोनों डायमेट्रिक एंड होता है तब 90 डिग्री होता है, राइट? अब नीचे है तो 90 डिग्री से कम होता है। ओके, कोई सा भी हर एंगल सेम ही होता है एंड दिस टू आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, नाउ कोई चीज अगर हम लोग माइनर आर्क में एंगल फाइंड करने की कोशिश करें, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, कोई सभी पॉइंट में अगर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें, it will be always greater than 90 degree. It's obtuse angle and this is acute angle. Okay, this is acute, this is obtuse angle in this case. So when theta is acute, you will find this will be the arc, that is Z1 P Q, major axis, major arc, and when theta is obtuse, you will find the locus is on the minor arc. Okay, that is Z1 Q, Z2, here it's the minor. I hope it's clear कि जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो माइनर आर्क मिलता है, जब थीटा एक्यूट होता है तो मेजर आर्क मिलता है। सो दैट वाज दिस 4 form of argument based locus. We will solve the questions related this on the next class. Okay. I hope आपने enjoy किया होगा. So what we have learned today is argument based locus. The 3 form of argument based locus. First form, there are 2 cases. First case was argument of theta is equal to argument of z, where z is a moving point. Okay. Argument of z is equal to theta. It will give you a portion of line
okay, except 0,0, okay, plus with the direction of angular distance from the real positive x-axis, okay। और वो डिस्टेंस कितना होता है, एंगुलर डिस्टेंस जितना थीटा रहेगा उतना है। अगर वो थीटा जो है वो प्रिंसिपल रेंज से ज़्यादा है, इट मीन्स -π ओपन टू +π क्लोज से बाहर है, तब उसको पहले प्रिंसिपल रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा, लाइक ±2n π एडजस्टिंग फैक्टर को या तो जोड़ना है या तो घटाना है, डिपेंडिंग ऑन द थीटा इज गिवन, ओके। सो फॉर्म 1 केस 1 was argument of z is equal to theta will give you a portion of line except 0 point, okay। Second case 2, form 1 case 2 was argument of z minus z naught is equal to theta, which is also providing a portion of line extended from which portion of line starting from the point z naught, ओके, z नॉट से स्टार्ट होने वाला लाइन मिलेगा आपको, ओके। नाउ फॉर्म नंबर 2, यहीं पे आपको टोटल कितना केसेस था, टोटल 4 केसेस था फॉर्म नंबर 2। फर्स्ट वन इज हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट इज z1 and z2 are two fixed complex number, z1 or z2 are two fixed and z is unknown, okay, yes। In this case first one you should remember that is argument of z minus z1 by z minus z2 is equal to 0 जब होंगे then you will find the extended line segment, extended line except the line segment z1 and z2, z1 and z2 को जो लाइन सेगमेंट से जोड़ते उसको छोड़कर बाकी एक्सटेंडेड लाइन तुम्हें मिलेगा। हॉलो सर्कल विथ z1 एंड z2, दैट इज द मेन डिफरेंस विद जो मॉड्यूलस बेस्ड हमने किया, ओके। केस नंबर 2 था उसी आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 by z minus z2 is equal to, जब पाई था तब हमें लाइन सेगमेंट z1 z2 मिला एंड ऑल्सो द हॉलो सर्कल वाज देयर। थर्ड केस में क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 by z minus z2 is equal to ±π था, तब आपको सेमी सर्कुलर आर्क मिला था, ओके, सेमी सर्कुलर आर्क। नाउ फॉर्म नंबर 3, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 by z minus z2 is equal to theta and theta is not equal to 0 pi or ±π/2, okay। In this case you will find a circular arc which is not semicircular, okay, circular arc। Now depending on the theta you will find major or minor. When theta is acute you will find major arc, and when theta is minor, when theta is obtuse actually you will find the minor arc, okay। I hope यहाँ तक clear है। Yeah, that's it for today। tomorrow हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड, एंड 2 टॉपिक बचा हुआ है इसमें, एक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, दिस 2 बचा हुआ है। आई होप 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन भी नहीं लगेगा एक्चुअली, कल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये, और 2 लेक्चर्स, 1 लेक्चर लगेगा उसके ऊपर, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस का 2 लेक्चर क्वेश्चन के ऊपर करेंगे, 1 घंटे करके। आई विल जस्ट प्रोवाइड हिंट्स एंड इन दैट क्लास 2 classes will complete almost for 30 to 40 questions we will cover, okay। I will just provide hints and yeah, but before that you should complete this 7 to 8 lectures, around 7 to 8 hours. Questions will be based on these classes and also yeah PYQs भी रहेगा। I hope आपने enjoy किया होगा। नहीं किया तो मान लीजिए कि enjoy किया है, ओके। सो ठीक है, चलिए बाय, गुड इवनिंग, ठीक है, बाय।